आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Assalamu alaikum everyone. This is Hassan Raza, the founder of Pep Talk Pakistan and HR Professional. Thank you for joining us today's show, where always bring amazing people who are going to help you, inspire you passionately. Let's discuss about today's session. Ladies and gentlemen, we will be having this session in two medium. One is Urdu and second is English, so the maximum people can reach to us. Ladies and gentlemen, my today guest is phenomenal. I am super duper excited today because आज जो हम आपके सामने गेस्ट लेके आए हैं ये एक सक्सेस स्टोरी है. I personally know her और एक इदारे में हमने इकट्ठे काम किया. अभी आगे चल के मैं वो सक्सेस स्टोरी भी आपसे शेयर करूंगा. You know what's special about her? She is always ready to help every job seekers. I have seen many posts of our guest on LinkedIn. बहुत सारी पोस्ट इनकी वायरल्स होती हैं एंड यू नो हर पोस्ट के अंदर कोई ना कोई लेसन होता है. बाय द वे, शी इज अ करियर कोच, शी इज अ seasoned HR professional. She strongly believes that the distance between you and everything that you want is only a one communication away. Well, I'm talking about today's guest, and her name is Maira Munawwar. And Maira is having more than 5 years working experience in the field of HR. She has worked with different companies like Rosie, Infotech, Resource, and currently she is working as a associate people business partner at Keep Truckin. ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूंगा. Let me put my guest on the stream. Hey Maira, welcome on Pep Talk Pakistani show. Thank you so much for joining us today's show. Hey Hassan, thank you so much for having me on over here. So honestly, I'm so excited about this pep talk today, and really it means a lot to me. So thank you for the nice introduction. Honestly, it was like so good to hear about myself. And yes, Great. so I would like to start by introducing myself. Though you have given a very good introduction about myself, so people, that's all about me. But yes, I would like to say that I never wanted to be in the HR, or I landed in this HR accidentally. So my parents had some different plans for me, but God knows how I ended over here. And by working in accounting, IT, training, retail industry, and also helping certain startups to build their HR department, made me realize, yes, this is the HR field, which is my passion. And honestly, I'm loving working over here. And also, I would like to say that I am hoping to add value in our conversation today. So yes, Hassan, let's just start. Great, wonderful. अच्छा, by the way, मायरा जो है, मायरा इज रियल टाइम सक्सेस स्टोरी. मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मायरा के साथ 2013-14 में आई थिंक हमें एक चांस मिला एंड वी हैव हायर्ड हर एज एन इंटर्न. And I was sure about that because she was very proactive and response time was very good. और मुझे पता था कि ये कुछ सालों में माशाल्लाह बहुत तरक्की करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह. and she did that. और आपको आई एम वेरी हैप्पी जब आपके जूनियर या आपके सबऑर्डिनेट इस तरह ग्रो करें. और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आई एम टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ आर इंटर्न, जिसको हमने 2013 में इंटर्न रखा था, और आज माशाल्लाह शी इज वर्किंग एज ए HR business partner for one of the best tech companies of Pakistan. So I really feel proud on you, Maira, and I'm sure that कि माशाल्लाह जो आपके पेरेंट्स हैं वो भी आप पे बहुत प्राउड फील करते होंगे. So Maira, first question that I would like to ask, जो हम जरूर लोगों से पूछते हैं जो पेप टॉक के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सबसे पहले हम उनकी सक्सेस स्टोरी उनसे सुनना चाहते हैं. दूसरा क्वेश्चन हम उनसे ये करते हैं कि रेफरेंस क्या वाकई जरूरी होता है जॉब के लिए. तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे वो HR इंटर्न से आज HR बिजनेस पार्टनर का सफर कैसे रहा, कैसे स्टार्ट किया. जिस तरह अभी आपने बताया बाय चॉइस नहीं था, बाय चांस था HR में आना. सो ओवर टू यू मायरा.
Thank you so much, Hassan. I think it is very, very interesting question, and I've been meaning to share my story for quite some time. But yeah, I think this pep talk has given me this opportunity to talk about it. जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक इंटर्न से HRBP सुनने में तो बड़ा स्मूथ लग रहा है, but honestly it was absolutely not smooth. And I think किसी का भी journey कभी भी smooth हो ही नहीं सकता unless until you put your entire effort in it. You just cannot reach your destination. So, I mean, it's always a learning process and you just keep learning about it. So, अगर मैं अपनी story सुनाना चाहती हूँ, तो yes, I was hired as an intern in one of the leading company, and Allah ka shukr, I happened to meet all the HR leaders of Pakistan, and honestly, this was by luck or by chance that I happened to build a very strong network, including you, and that network actually helped me made visible. So when you're visible, it actually gives you an edge over the others. So yes, building network is very much important. But then just second question, that if you have references, you get the job easily here in Pakistan. I would like to say it's somehow a myth. So, I mean, you just entirely cannot depend on the references if you don't have something in you, or if you are not that much, inclined of getting something, and you solely cannot rely upon the references. Alhamdulillah, I built a very good network, and I'm still in contact with all of them, and they help me become what I am today. Because yes, you need a mentor in your life, no matter how hardworking you are, but you really need a teacher. You really need somebody from whom you can learn, and that network actually built me what I am. But to land on a job, I am going to be very honest over here. In my past 6 years of career, I've been rejected for around 40 times, and I think it's a huge number. Okay, I got the job offers from many places as well, thanks to Allah. But then again, I would like to share this story with all the freshies or all those who are out there who are striving to get the job, and they get the rejections, and then they think that this is the end of the world. Come on, man, this is not. So, rejection is something where you can actually, get the opportunity to see where you are lacking, how you can fix it, and how you can actually improve yourself to get what you really wanted. So those 40 rejections made me step back and think what I was lacking. I had good references, I had a good network, but at the end of the day, you really need your capacity, your capabilities, and your confidence. The confidence in yourself that yes, you can get this. So, dear people, never Hmm. lose your heart. आपकी बहन आपके सामने है. If you are हाँ, determined and rejection आपको मिलता है, तो I mean, you really need to, see, आजकल market full of competition है. yeah, There's yeah. a lot of talent. Honestly, I feel like the next generation, which is, popping up in this job market, is way much equipped than us. They are coming with such kind of talent and the Yeah. capabilities, which we were, I mean, kind of Hmm. lazy to, grab them. So honestly, you really need to keep learning. You really need to keep building yourself if you want to exceed in the field you want to. So reference do matter to maybe get your CV in front of them, but to land on a job and to maintain your career and to sustain that profile, you really need to have the confidence in yourself and the ability in yourself. So I think this Great. is my very honest feedback. Yeah. Wonderful, wonderful, Myra. I mean, it's really inspirational story. अच्छा, would like to ask क्योंकि हम लोग जरा हमारे now by the way we are live on LinkedIn, YouTube and Facebook. So बहुत सारे जो हमें जो job seekers हैं वो देख रहे होते हैं. So I mean it's really a wonderful message कि 40 दफा rejection मिली, लेकिन उस rejection को convert किया redirection में. उसको Yeah. अपने आप को अपने ऊपर काम किया होगा, रीडायरेक्ट किया होगा, यार क्यों रिजेक्शन मिल रही है भाई, उस रिजेक्शन को ठीक करें. तो आज वो जो माशाल्लाह जो सफर है इंटर्न से जो एचआर बिजनेस पार्टनर का, आई मीन इट्स रियली ग्रेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस Yeah. इज द रियल पॉजिटिव And इमेज ऑफ पाकिस्तान. ये आप जैसे लोग हैं जो कि माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है रोशन कर रहे हैं. I know that the way we are working and you're working with direct international US clients के साथ, I mean exactly. different players are so really good work and credit goes to you by the way. So
अभी हम जरा बात I करते just हैं। would like to add one more thing in it. या Yep, thank you about it. So, like whatever job I have got in my life, it's purely on the merit basis. So again, a very important message to all the people who are, looking for jobs. I mean, go for the actual process. You can always use your references, but never, surpass that proper process. If you are, scanned and screened properly, I mean, no power can stop you, man. So always apply. या And thanks to Allah that yes, I've got this job purely on the merit, no reference, nothing at all. So yes, just believe in yourself. या वंडरफुल वंडरफुल एंड राइटली सेट। और जो देखिए मैं वो बड़ी आज मैंने एक लिखा लिंक्डइन पर, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलमोस्ट वायरल, एंड दैट पोस्ट इज कि जिंदगी में आपको बहुत दफा हारना पड़ता है जीतने के लिए। और वो जो बिल्कुल सही हार हो होती गया। है ना, वो जो हार होती है ना, हार, वो ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। वो हार, वो रिजेक्शन जो है, वो एक नए सफर का आगाज होता है। वो बिल्कुल सही। आपको जीत की तरफ लेकर जाती है। वो हार Yeah. आपको एक रास्ता बनाकर देती है जीत की तरफ। और अगर आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए हैं, अगर आपने कोई बिजनेस हाँ। स्टार्ट किया, वो नहीं हम्म। चला, देखें बात ये है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, लगे रहें, डटे रहें, लगे रहे। कंसिस्टेंट रहें, एक दिन अल्लाह ताला ने आपको कामयाब कर देना है। क्योंकि बिल्कुल सही। जो आपको इतना प्यार करता है, वो हो ही नहीं सकता कि आपको मतलब इस तरह से ना हो। आई मीन आप कामयाबी आपको मिलनी है, लेकिन टाइम के साथ। जॉब भी मिलनी है, वो भी टाइम के एग्जैक्टली। साथ। आपका काम हम्म। है कोशिश करना, अपने आप को या। प्रिपेयर करना। मायरा जी, ने आज नेवर हमें सेल। बताया कि 40 दफा रिजेक्शन मिली है। आई मीन शी इज हैविंग अ वेरी स्ट्रांग नेटवर्किंग, रेफरेंस भी था। लेकिन भाई जहां पर आपने जाना है, जहां पर आपने नौकरी करनी है, जिसने आपको रेफर किया होगा, वो भी कह रहा हो यार कि मतलब मैं किसी काम के बंदे को रेफर करूं, मतलब आगे जाके ये एग्जैक्टली। है। लेकिन उस प्रोसेस से गुजरना आपने है। पाकिस्तान में अलमिया ये मायरा के इंटरव्यू तक भी आपको शायद हम्म। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली। में रेफरेंस शायद काउंट करता है, सिर्फ इंटरव्यू तक आपको ले जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपने इंटरव्यू खुद तक भी जा सकते हैं, आगे तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना। हाँ यार। बिल्कुल सही। ओके जी, सो वंडरफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ फॉर्मल सेशन। बाय द वे, बहुत हमें अभी कमेंट्स भी आ रहे हैं, और या। लिंक्डइन पे भी लोग जो हैं वो हमें देख रहे हैं, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। आज का जो हम्म। हमारा टॉपिक है, दैट इज अबाउट मैपिंग न्यू हायरिंग जर्नी, प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड प्रायोरिटीज। सो मायरा, क्या होती है ये जो ओरिएंटेशन है, ऑन बोर्डिंग है? लोग अभी हमें देख रहे हैं, आपको भी लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको लोग लिंक्डइन पे माशाल्लाह फॉलो करते हैं। एचआर फ्रेटर्निटी में माशाल्लाह यू हैविंग वेरी गुड नेम। तो आप जरा हमें थोड़ा सा गाइड करें, हमें थोड़ा बताएं कि ये ओरिएंटेशन क्या होती है, ऑन बोर्डिंग क्या होती है, क्या प्रोसेस है? ऑनेस्टली हसन, ये बड़ा आपने मज़ेदार सा टॉपिक छेड़ा है, क्योंकि पोस्ट कोविड आई थिंक everything has been revamped. This onboarding, orientation, and even this entire employee experience has absolutely changed post COVID-19, and even the organizations and the entire HR fraternity is reimagining that how they have to make sure that the experience of the employee is this much that they are, they get what they really want to get. So I think अगर हम इसको literal meaning में define करना चाहें, तो this is the huge responsibility of the HR themselves, that how they are well prepared before, getting the journey of new hires started, and making sure that the experience they are going to get is something making them sure of the company they have joined. So, as there is a saying that people can forget what you have said, people can forget what you have done, but they can never forget how you made them feel. तो आई थिंक ये जो मेड देम फील वाली बात है ना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एचआर के ऊपर है। और दिस पोस्ट COVID-19, how you need to rethink this recruiting thing. This is all about a very important responsibility, because now the candidates we have, or the people who are in the market for whom we have to map their hiring journey, is somewhat belonging to Generation Z, the one who are born after 1996. So these people are not the ones like us who were,
I mean, okay, good enough in their skills, but not getting extra knowledge or something like that. So I would like to say this Generation C is coming with good enough knowledge about technology. They are, having high level of energy, and they really want to do something to, tackle this generation, or the candidates who are even not belonging to Generation C, but are, because of this digital world, are well aware of how to proceed in their career. So the HR really, really need to rethink how this process is going to start. So I would like to say that now the talent acquisition is actually, making all those mundane HR operational tasks automated, ताकि जो हम एक अच्छा सा टैलेंट जो हम पुल आउट करना चाह रहे हैं ताकि हम वो कर सकें। तो ऑनलाइन इंटरव्यूज इसीलिए होते हैं कि उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं और उनका जो पैशन टू लर्न एंड ग्रो है वो हमें शुरू में पता चल जाए, instead of bringing them on the in the office and going through all that. So this all kind of steps are already done digitally post Great. COVID-19. Now many organizations have to work, so this is already being done. And many organizations, even if it's people organization or a tech organization, they are now thinking the world has changed and how they have to use the Yeah. technology in order to revamp the journey of the new hires. Wonderful, wonderful, Myra, wonderful. By the way, we are having this session in two medium. One is Urdu and Yes. second is English, so the maximum people can reach to us. अभी जरा मेरे को I'll try request my भी आ best. हाँ Yes. लिंक्डइन पे सो हमारे साथ इस टाइम काफी लोग हैं हमें सामिया कमर ने ज्वाइन किया एसएनपी ग्लोबल की डायरेक्टर एचआर है शी इज सच अ Wow. सीजन प्रोफेशनल वो हमारे Yeah. साथ हैं और सैयद अली अब्बास आबदी का एक क्वेश्चन है उन्होंने किया नबील अली के कमेंट हैं कि प्लीज आस्क आवर गेस्ट दैट शी कैन स्पीक इन उर्दू एज वेल या शी कैन Okay. स्पीक Sorry, इन Nabila. मैं या अब सो उर्दू के अंदर ही इंग्लिश बोलूंगी. मिक्स कर लेते हैं ताकि लोग जो हैं वो मैक्सिमम लोग तक हमारा मैसेज जो है वो पहुंच सके बिल्कुल सही एंड यू बात. राइटली सेड कि हमारे यहाँ अभी जो टेक में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वाकई रिक्रूटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो इवॉल्व हुई हैं और अभी हो भी रही हैं अच्छा हम इस पे मैपिंग न्यू हायरिंग जर्नी पे तो जरूर बात करेंगे जैसे अभी आपने एक कमेंट दिया और उसके अंदर आपने ये भी कहा कि जी के इंटरव्यूज जो हैं हमारे वो पहले हो रहे थे फिजिकल अब जो है बिल्कुल. वो सारे ऑनलाइन होते हैं जूम पर होता है आई मीन स्काइप पर होते हैं या आई मीन किसी भी जो भी मीडियम यूज कर रहे हैं. हाँ. उस पे हो रहे होते हैं अच्छा लाइक टू नो दैट कि हम अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है हम हमारे जेहन में कभी वहमो गुमान में नहीं था कि कोविड-19 आएगा और इस तरह से बिल्कुल हम सही. वर्चुअल सेशंस कर रहे होंगे और ये सब चीजें होंगी तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि बीइंग एचआर प्रोफेशनल जब कैंडिडेट इस तरह आते हैं लाइव सेशन में जब उनके चल रहे होते हैं इंटरव्यूज सो व्हाट डू यू वांट टू एडवाइस देम कि वो क्या क्या किस तरह प्रिपरेशन करके आए क्योंकि देखो मायरा हमें नहीं पता था फिजिकल इंटरव्यू के अलावा कि और भी कोई इंटरव्यू इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो तो तैयारी इस तरह से होती नहीं थी कैंडिडेट्स की सो व्हाट डू यू थिंक दैट ऑन पर्टिकुलर केस कि जब वो इस तरह ऑनलाइन आए तो किस तरह की प्रिपरेशन जो है उनकी होनी चाहिए हमें आपने फोन कॉल्स का भी बताना है टेलीफोनिक बिल्कुल इंटरव्यू का सही. भी लोगों को आइडिया नहीं होता आपने हमें वीडियो का भी बताना है तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी आप लाइव सेशन में जा रहे होते हैं देखो वी आर बेसिकली ज्यादातर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग हैं वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली तो हमारे बिल्कुल घर सही. जो है ना हमारे घर छोटे छोटे हैं और फैमिलीज हमारी काफी बड़ी बड़ी हैं तो जो बिल्कुल ही सही. लाइव सेशन स्टार्ट होता है तो पीछे से बच्चे आ जाते हैं आई मीन कोई आवाज आ जाती है तो इस तरह से है तो आप क्या एडवाइस करती हैं कि किस तरह से हाँ. इस चैलेंज को कॉप अप किया जाए जी ओवर टू यू मायरा Thank you, Hassan. I think ये जो challenge है, this is not only for Pakistan, it is for the entire world. Working remotely or working from home and making sure that you are that productive, उतने ही आप productive हैं जिस तरह से आप office में काम करने पे होते थे. तो पहला मैं आंसर देना चाहूंगी जो पहला क्वेश्चन था कि how to perform good in the online interview क्योंकि physical interviews की जो हमें techniques और tips दी जाती थी कि you need to be very confident, your body language will be noticed. I mean, of course इधर भी body language को notice किया जाता है, but there are many other things attached to it which you really need to make sure. First of all, prepare yourself. Never, never, never ever go unprepared.
because this is your one shot. If you're not going prepared, agar aapki apni tayari nahi hai, I mean, just, whatever the interview is going to happen about, whatever the position is, explore it. Look at the website, look at the organization, try to understand what they are doing. If you're not, prepared about कि company करती क्या है, उनका ये जो job role है, उससे आपकी मतलब उससे उनकी क्या expectation है आपके लिए, तो I mean आपका most of the interview वहीं पे खराब हो सकता है. So make sure कि आप पहले जान लें कि क्या होता है. If you are prepared enough, then prepare yourself. Okay, so अभी इसके अंदर मैं एक चीज add करना चाहूंगी. I've been taking so many interviews in the past few years, and I was really, really sad to know कि जो हमारी generation है, they may be very much good in communication, but at the same time, there is a group of people who are not working on their communication skill. अगर आपको job नहीं मिल रही है, it means you'll get one day, but you have time to work on your skills, your interpersonal skills. So stand in front of the mirror or anywhere, just, make yourself more comfortable in talking and speaking online. अपनी video ही बना के अपने आप से बात करके देखें कि how you speak it. So I feel like that there is a huge gap where they really need to work on their communication skills and interpersonal skills. क्योंकि अगर आपका digital agree, interview हो रहा है, it's going to be hmm, on the communication. So agreed, make agreed. yourself prepared. Yeah, और फिर उसके बाद अगर आपने अपने ये communication अच्छा, skills पे work हमारा किया होगा एक तो बड़ा अच्छा हो और जाएगा. जो And बिल्कुल एक क्वेश्चन और आई वुड लाइक टू सॉरी फॉर इंटरप्शन एक no क्वेश्चन worries. और जो मुझे कहा जाता है कि जो आप ज़रूर पूछा करें, वो ये कि देखो मेरा सम टाइम ये होता है कि हम क्या करते हैं नॉट एवरीवन मतलब सम टाइम कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं यार इसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। हाँ, आई मीन परफेक्ट अंग्रेजी है भाई इसको रख लो। आई मीन फिर वो होता है कि बाकी चीजें हम देख नहीं रहे होते हैं वो पूरा हाँ. पैकेज हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं सम टाइम सो व्हाट डू यू थिंक दैट कि ठीक है आई मीन कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने यूएस क्लाइंट्स के साथ बात करनी है तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए बट what do you think as HR प्रोफेशनल कि क्या हमें कंप्लीट पैकेज डिस्कस करना चाहिए और कम्युनिकेशन को कितनी वेटेज देनी चाहिए? This is something very, very important, or thank you for highlighting this, Hassan. बिल्कुल अब I mean I'm not blaming everybody. गुड कम्युनिकेशन, अच्छी अंग्रेजी हुँ, आपको शायद जॉब हुँ, दिला दे, लेकिन उसके बाद आपका टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए, आपका नॉलेज भी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस चाहिए, तो अच्छी अंग्रेजी से आप सारा कुछ वो नहीं कर हुँ, पाओगे. मे बी यू कैन गेट द जॉब अगर बहुत आप हुँ, अच्छा बोलते हो, एंड इवन फॉर द एम्प्लॉयर्स, they are just looking at the spoken English but हुँ, not looking at the entire package. I think that is their loss, and people are getting much aware of it that सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलने से नौकरी नहीं हो सकेगी. So you really हुँ, need to see the whole package. You really need to see their technical skills. You really need to see their past performances and their even potential to learn and grow. अगर आपको वो सारी चीजें भी मार्क करती हैं, only then you need to hire that अच्छी अंग्रेजी वाला बंदा. And एग्री honestly, जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, they also need to work on it because हुँ, organizations are evolving. They need somebody, and most of the organization are dealing with international clients. So if you're या not able to communicate, तो आपके फिर जो हार्ड स्किल्स हैं वो भी किसी काम के नहीं है. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आई मीन देयर शुड या बी अ बैलेंस अच्छा, फॉर द अच्छा मायरा कैंडिडेट्स एंड फॉर द हाँ, एम्प्लॉयर्स. या और कम्युनिकेशन खाली बोलना नहीं है, समझना हाँ, भी है। आई मीन कहाँ पे बिल्कुल, रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करना, चुप रहना भी कम्युनिकेशन एग्जैक्टली, है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यार मतलब मैं अगर बोलूँ भी आई मीन देखिए इन द एंड यू हैव टू कम्युनिकेट योर मैसेज, चाहे वो उर्दू में एग्जैक्टली, हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो। आई मीन लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे यहाँ अलमिया ये है, डायलेमा ये है कि लोग कहते हैं यार बोलना ही सारा कुछ है। भाई ये नहीं है। एग्जैक्टली. आपका समझना बहुत ज़रूरी है। समझना बिल्कुल आपकी जो ज़रूरी. रिटन कम्युनिकेशन है, ईमेल टू किसे करना है, सीसी किसे करनी है, बिल्कुल लोग सही. बीसीसी कर देते हैं। आई मीन या तो आपने बड़ा अच्छा बहुत पॉइंट सारे ऐड किए कि जी, लिसनिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए सिर्फ स्पोकन के साथ-साथ. जब तक आप लिसन नहीं कर पाओगे, तो आप या उसी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे. यू आर राइट अबाउट इट. Great. Great. So, Myra, my next question is that how is hiring changing in the new workplace and what is the role of technology in that? I think this question is most of the like part is covered in my previous answers, हाँ, but या, ये जो है क्या कहते हैं पोस्ट कोविड हायरिंग किस तरह से बदल रही है
और बाकी हम being a talent acquisition team इसको किस तरह से लेके जाना चाहिए और remote workplace को हमने कैसे देखना चाहिए. I think it is a very fast-paced world now. So every organization is, working so fast to get the right talent. So like make sure that you have the right skills and make sure कि आप जो है remote काम के लिए भी अपने आप को इतना आपने equip कर लिया है कि there is जो एक gap होता है वो feel ना हो कि आप office से काम कर रहे हो या आप घर से काम कर रहे हो. So you really need to make sure कि आप equipped हैं इस सारे के लिए. So what do you think of this, Hassan? कि क्या कहते हैं ये जो एक people organization है जो कभी भी remote की option ही नहीं देती थी और अब जो tech based companies हैं and they are actually thinking about कि the spaces which they have hired and now the people are more productive working from home. There were challenges before because not everybody was ready to work from home. But अगर अब वो अपने आप को इतना productive बना रहे हैं and they're just not sitting on the laptop to show your face value, but they're actually producing the result. So I think this remote system is also giving the new dimension to the HR teams and also the organization that how they can actually get the real result they're looking for. Hello, Hassan, did I lose you? Internet is creating a problem, but Oh, we'll see that. yeah. Okay, the next question is that how should HR team think about revamping their candidate experience for remote talent? I mean, पहले भी हम जरा इसके ऊपर बात कर चुके हैं, थोड़ी सी हमने किया, तो आप जरा थोड़ा सा इसके ऊपर और बता दें कि क्या क्या चीजें हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू का बता दें जरा, थोड़ा सा हमें वर्चुअल बता दें कि किस तरह से हम अब जैसे पीछे से मेरे से भी पीछे से बैक स्टेज पे आवाजें आ रही हैं बच्चों की, पीछे बच्चे हमें कह रहे, कोशिश तो मैंने I करी थी लेकिन myself, somehow क्योंकि वी आर नहीं हो सकता. फैमिली सो या So it's सो not only about क्या कहते जी हैं बच्चे honestly जैसे आपने पहले भी mention किया है कि most of us belong to the middle class and we don't have this much room कि हम एक quiet corner ढूंढ के अपनी meetings वगैरह attend कर सके. So आपके pets आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके बच्चे आपके ऊपर आ रहे हैं और एकदम एक urgency आ रही है. So this is something जो कि होगा. So I think at the employer side they also need to make sure कि अब जब remote काम होना है तो these challenges are going to happen and how they have to give the space to their employees कि वो जो है इस चीज को मैनेज भी कर सकें और साथ परफॉर्म भी कर सकें. लेट मी गो बैक और मैं बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये जो रिमोट वर्किंग एक्सपीरियंस को और रिवैम्प करने के लिए क्या करना चाहिए. सो आई थिंक कि अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देती हूँ सो आई वाज हायर्ड रिमोटली. So when I was hired remotely, I had so many questions. Honestly, जो भी एक न्यू जॉइनर होता है उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं. पता नहीं किससे पहले मिलना है, कैसा मेरा पूरा ड्यूरेशन होगा और मतलब कि इवन आईटी इक्विपमेंट इसका पासवर्ड क्या है और किससे पूछूं, कोई नंबर नहीं है या कुछ नहीं है. So I think now companies need to be very proactive in just mapping this whole remote hiring process because I don't know ये uncertainty कब तक रहनी है कोविड की and till when we are going to keep hiring remotely and keep making sure कि हमारे workforce remote productive काम कर सके. So if they're like proactive, they really need to map out how the IT equipment is going to be delivered at their place right on time with all those necessary credentials. And I would like to say that they can also share the manual right on the first day where they can give them the whole idea of training or the whole a menu of training that this is your probationary period and we are going to walk you through all these processes, all these departments, so you have the better understanding. अगर first day उसको सारे इस तरह के docs मिल जाते हैं रिमोटली ही उसको पहले डिलीवर कर दिए जाते हैं तो आई थिंक वो जो एक क्वेश्चन होता है, एक फियर होता है न्यू जॉइनर के ऊपर, that can be reduced. And honestly, the way you make their onboarding smooth will actually make them help stay at the company for a longer time. And we really need the organizations to work on the retention of the new hires. So I think अगर हमारा hiring process से शुरू से revamp हो चुका है तो it is actually going to help in making the health of the organization better. So organization health तब भी हो सकती है अगर हम
राइट टैलेंट को एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हायर करते हैं, रिटेन करते हैं, उनका जर्नी एक खूबसूरत सा बनाते हैं, because the way we make them feel is always going to make them stay. No, though people want to go for, you know, bigger paychecks or bigger names, but at the end of the day, अब remote काम करने के लिए you need a work life balance as well. और अगर आप इस काम के ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने टैलेंट एक्विजिशन टीम और अपनी HR टीम स्ट्रेटेजिकली इस तरह से सोच रही है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ ही आगे डेवलप होएगी. Or and then finding out like who is the, you know, crucial candidates and how you're going to make them stay. So ultimately आपकी attrition के ऊपर भी affect होता है. So this hiring Yeah. thing is the key. You really need to be very proactive and very you know, picky about all those steps to make the journey amazing and smooth. जरा Sorry, system oriented. Can you hear me? Can you hear me now? I can hear you now. Yes, I can hear you. Okay, great. तो अभी हमने बात की जरा सिस्टम ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटेड चल रही हैं. आई मीन लोग आ रहे हैं तो उनको उनको ओरिएंटेशन प्लान मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, ऑन बोर्डिंग का पूरा प्रोसीजर है उनको मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं. एंड व्हाट अबाउट द पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन? I lost you, Hassan, again. I think I have bad internet at the moment. Hello, Hassan. Can you hear Can me you now? hear me? Yes, I can. Please continue. Yeah. Now this is the Yeah, I challenge. can. This is the challenge working from home. Yeah. You're working from home. Yeah, agree that. It's a real time example. Agree that. ये डेमो है. बिल्कुल. हाँ, ये डेमो है. इंटरनेट आ रहे हैं, So जा रहे I'm हैं. asking, I'm asking to you कि अगर I lost you again, Hassan. जहाँ पे अभी उस तरह से Hello? oh my god, I think that we are having an issue. Yeah, it's red again. So Maira, are you with me? I'm sure that you're giving my voice is audible for you. Maira, are you with me, Maira? Ji Maira, can you hear me now? I can hear you and I'm back again. Great, Yeah. great, wonderful. So it's a real time scenario जो कि हम लोगों को दिखाना चाह रहे थे और हाँ, opportunity तो इंटरनेट ने इसमें मैं कहना चाहूँगी घबराना नहीं है. So, you know, people understand कि ये चला जाएगा. Your employer understands. So just never lose your real focus. कोई बात नहीं, इंटरनेट जाता है, आता है, but then keep working and keep doing what you are doing. A great, wonderful, rightly said. By the way, मेरा इंटरनेट फिर प्रॉब्लम कर रहा है. अच्छा, we are going to wrap up rapid fire segment with you. Okay. So you ready for the rapid fire Yay. segment? Excited. Great. Okay, great, wonderful. So, ladies and gentlemen, you can also follow Maira Munawwar on LinkedIn. I mean, you will learn a lot from her. Can follow her on LinkedIn as well. हो जाए लेकिन I think वो request नहीं मान रहे हैं. So we'll be having a quick rapid fire segment and then we'll wrap up. Okay. Perfect. So my first question regarding rapid fire, and that is, as an emerging HR leader, what keeps you up at night?
I think my children, my family, because I really think I want to be something for my children that they are proud of when they grow up, and that keeps me moving, that keeps me working hard, and yes, my being myself. Okay, the next question. Myra, can you hear me? Yes, I can hear you now. I think you need to be quick. Describe today's HR in one line. I think HR today is a partner, is a Mm, multifunctional partner who is not only responsible for a set of HR tasks, he should be part of every single department. और अगर वो every single department है तो तभी वो सही perform कर सकता है. Equipped with great, all kinds of knowledge. Yeah. great, wonderful. Okay, ji. I lost you again. Okay, okay. Who is You're your back. inspiration to be an HR professional? Okay, now this is tricky. Honestly, there are so many people from whom I've learned, and I'm still following them for all kinds of tasks and all. But I think I would like to name Saima Arshid, and I would like to name Narima Qureshi. These are those superwomen in the HR industry, which I really look to them for my all kinds of future goals, and I think they are doing an awesome job. Great. They both are really seasoned HR professional. By the I way, मैं agree. भी बहुत fan हूँ इन दोनों का. I mean, they are amazing. Yeah. Yeah, Okay. they The are. next question is that a stranger's first impression of yours would be. Sorry, I lost you. Can you repeat again? Yeah. A stranger's first impressions of yours would be. Oh, ये तो ना पूछो. I think people who look at me, they say कि आपको showbiz join करना चाहिए था because I am kind of more active in this fashion side as well. So I just want to say that yeah, never judge the book by the cover. Mm, There's a mm. lot more inside everybody, and there's a lot story to tell. So I think, but I do enjoy that first impressions. ठीक है. Okay. The next question is that what are your biggest strengths? Okay, I think my biggest strength is that I am a survivor. I Mhm. am a I believe in continuous improvement, and then I feel like that I never give up. ग्रेट. अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और हम ऑलमोस्ट सारे जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि व्हाट पाकिस्तानी कंज्यूम लेस ऑफ इट. सबसे कम काम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए? I think gossip. They just waste a lot of time on talking about something जिसका कोई impact नहीं है, जिसकी कोई और फिर value हम नहीं है. वो हम Yeah. शायद एक दूसरे को I जज think भी कर I'm रहे also होते part of that. I हैं. have या judgment and gossip. So I think I'm also part of that shift. But then again, when you realize कि आप कुछ गलत कर रहे हो और आप जब सोच लेते हो कि उसको improve करना है, तो फिर improvement भी आना शुरू हो जाती है. So we really need to stop gossiping and we really need to stop judging. ग्रेट. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वन वीकनेस यू कैन डू विदाउट. One weakness that I can do without. या Uh, okay, I think French fries. I eat a lot. Okay. Okay, Ji. Next question is that if we have to automate you and ask you to keep one human quality, what should that be? I think again this struggling thing, this never backing up thing. I think Okay, I am great. the consistent person. Yeah. Okay, wonderful. The next question is that what's the most used app on your smartphone? I think most of the people are using WhatsApp a lot, but in my case, it is varying between Instagram and also uh, this Pinterest. I like to explore new ideas, so I keep looking at those ideas and all. But yes, Instagram. Great, wonderful. Okay, Ji. Next question is that what excites you and motivates you in your role? Um, the I think the biggest motivation behind my entire journey is that
myself. I am a kind of a narcissist as well. But yes, my biggest motivation is my family, my kids, my husband. I really, really, want to do something for them. And I really feel like that the world today needs an independent woman, and that keeps me motivated all the time. Great, wonderful. Acha, Myra, we have to wrap up the session. So, the people are following us on LinkedIn, YouTube, and Yeah. Facebook. So, would like to, what kind of advice that you want to give the followers of Pep Talk Pakistan? Okay, so and thank you so much, everybody, for following me. And again, Hassan, thank you so much for having me over. The one quick advice for everybody is like, just keep yourself Mm, motivated and keep improving yourself, because the world is changing on a very fast pace, and you really need to be fast with it. mm, I think also, I certainly believe that time is passing, so try mm, to enjoy every single moment, because mm. you never know this will come again or not. So I believe in this, that life is too short to take it Yeah, slow, and I just want to cherish everything in my life, whether if there are bad moments. I know they will pass again. So a very quick advice to everybody: try to find happiness in every little thing you see around, because you never know when your life is going to end. So be great. happy and be thankful. Yeah. वंडरफुल। अच्छा, एक एडवाइस आप, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे लोग जो हैं जॉब सीकर्स हैं वो देख रहे हैं, Yeah. पर्टिकुलरली ऑन लिंक्डइन। सो वो अभी एंटर होना चाह रहे हैं वर्क प्लेस में, आई मीन इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रहे हैं, तो उनको क्या आप एडवाइस करेंगे? That is a very simple advice to all of them, to never lose hope. हम्म, अगर आपको रिजेक्शन मिलती है और अगर नहीं मिलता, तो I mean, I think you really need to build on yourself, but then हम्म, again, you just can't blame कि मेरे पास नहीं थे. At times ऐसा हो सकता है कि आपके skill set किसी job profile से match नहीं कर रहे, but हम्म, it doesn't mean that your capabilities are not going to be tapped somewhere else. So just keep applying. I mean, it's like if I got 40 rejections, so maybe I've applied for like 200 positions. So always, never give up. Try to हम्म। see what wrong you did, and then again build network. Do build network to maybe make yourself appear somewhere, but then again build yourself if you want to sustain and maintain yourself. Great, great. Wonderful, rightly said. Thank you very much, Myra, for joining us today's show. I mean, you were amazing and superb. I'm really glad Thank that, you. I mean, wonderful contribution, and हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। इसी तरह हम Thank you so हंसते much. मुस्कुराती रहें और पाकिस्तान का नाम वो आप रोशन करती रहें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। or I really enjoyed that, and the feedback that I'm getting right now on LinkedIn, I mean, it's really amazing. And credit goes to you, by Yeah. the way. You have contributed a lot. So I would request you that future में भी आप इस तरह पेप टॉक पाकिस्तान का हिस्सा बनते रहें और आप जरूर हमें टाइम इंशाल्लाह. देते रहें। बिल्कुल सही. I really enjoyed this experience, and inshallah we'll be in touch. And again, people, if you have any question, you can always ask me. You can always Yeah, drop a DM to yeah. me. And again, thank you so much, Hassan. You are doing an awesome job. I also know this Hassan from quite some time, and I've Mm, seen him grow. I've seen him build this amazing network where we can, express ourselves. So good luck to you for more talks, and I am going to watch more shows of yours. Thank you. Thank you, Myra. Thank you, everyone, for watching the today's episode of Pep Talk Pakistan. I really enjoyed that, और मैं श्योर हूँ कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। कल हम एक नए एपिसोड के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। प्लीज डू शेयर योर फीडबैक with us so we can Yeah, improve accordingly, or you can subscribe our YouTube channel on with the name of Pep Talk Pakistan, और इंशाल्लाह ताला दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, पाकिस्तान take जिंदाबाद। care, थैंक यू। everybody.